में पहुंची मल्लिका शेरावत की पॉलिटिक्स क्या है, क्या पता है आपको? अगर नहीं तो देखिए कैसे आईफा में रंग बदल लिया है मल्लिका ने। जिस मीडिया को मल्लिका कल तक टैंट्रम दिखा रही थी, उसी मीडिया को वो अब कर रही है सेड्यूस। भाई मल्लिका तो टोरंटो आते ही पहले वाली मल्लिका बन गई थी, उतनी ही कॉन्फिडेंट जितनी वो पिछले साल कान फिल्म फेस्टिवल में रही थी, जब वो प्रमोट करती दिखी थी हिस भले ही हो गई फिस। मल्लिका की रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। It's very rare that Indian actors get an opportunity to be part of, to be a mainstream American film where you're playing a mainstream American character. So I think that really means a lot to me. ये तो मॉडेस्टी हुई, पर अपने को स्टार ब्रायन जे वाइट को बॉलीवुड के दबंग से मिलवाने के लिए भी उतावली रही थी मल्लिका। और देखिए जब आईफा में दबंग सलमान का किस्सा दोबारा छिड़ा तो मानो मल्लिका को मिल गया एक और मौका अपनी लंबी लंबी हाँकने का। Bollywood actor Salman Khan, he has a six-pack and he takes his shirt off, and so does Hrithik Roshan. So let's see what you got. I want to see what I was working with. So did you get a chance to match with those people? I haven't compared. But maybe we can, when she shows the movie, we'll freeze frame and see how. No, we approve. All the girls approve. वैसे आईफा को अपनी फिल्म्स की पब्लिसिटी का प्लेटफॉर्म बनाने वाले स्टार्स में मल्लिका अकेली नहीं थी। उनका साथ दिया हेमा मालिनी, ईशा और धर्म पाजी ने। डियोल फैमिली ने यहाँ प्रमोट की हेमा मालिनी की डायरेक्शन में आने वाली ईशा की फिल्म टेल मी ओ खुदा। It was really a wonderful experience directing Dharamji and Isha, because Isha is, of course, I keep directing her at home also, so it was nothing new. But only thing I had to tell her what she has to perform, and she was doing it really. She is a very talented girl, so I was able to take out the best out of her. Isha is my darling daughter, as every father loves the daughter, though I love all children. Okay, your question. And girls are more close because one day they have to get married and go away. So they get little more than sons. I put in a lot of hard work. All of us have put in a lot of hard work into this film, and it's very close to my heart. This is one film that I've been involved in right from the beginning, from the scripting stage to now the post-production work. So I know what all goes into making a film. Well, ये तो हुई आईफा के इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाइमलाइट बटोर रही फिल्म्स की बात। अब आपको मिलवा देते हैं ऋषि कपूर से, जिनके लिए इस बार आईफा लाया है डबल खुशी, क्योंकि कपूर खानदान के नाम से एक और अचीवमेंट जुड़ गया है। Absolutely mesmerized and thankful to the Canadian government and to the government of Ontario that they have actually named a street after Raj Kapoor. It's called the Raj Kapoor Crescent, and we are very humbled, very honoured. We are still blushing that a man who's probably unknown in this part of the world because of his work, today there is a place in the so-called Little India that's crammed a street called Raj Kapoor Crescent.